स्टार्ट करने लगा। Assalamu alaikum. Today on 30th June 2021, I'm starting lecture number 1 for week number 14, and the topic of today's lecture is normal distribution. What is normal distribution? Actually, it is a bell-shaped curve represented in this slide, whose center depends upon the mean of the normal distribution, while the spread of this bell-shaped curve depends upon the standard deviation of normal distribution. Depending upon the values of mean, this curve may shift towards the right-hand side or towards the left-hand side of the position where it is drawn. And depending upon the value of standard deviation, its spread may be increased or decreased. So this is the bell-shaped curve that represents the probability density function of standard normal distribution if the mean is 0 and the standard deviation is 1. Okay, so what is the density function of this curve? So this is the density function of this curve, f of x 1 upon standard deviation to root of 2 pi times exponential of minus half times x minus mean upon standard deviation whole square. So you can well imagine that it is a very difficult probability density function. But no matter how difficult this density function is, we can always integrate this function for the entire domain, that is from minus infinity to plus infinity, and get a value equals to 1. So it is a correctly defined probability density function. It has two constant, one is pi, obviously you know the value 3.14159, and the other is e, that is 2.71828. So obviously this curve depends upon two values. Number one, mean of the normal distribution, and number two, the standard deviation of the normal distribution. Okay. So no matter what are the values of mean and standard deviation, this probability density function always integrates to 1. जब भी इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का टोटल आंसर क्या आएगा? 1. लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन करना इसकी काफी मुश्किल है, तो क्या करें हम? कैसे इंटीग्रेट करें? सर इसके आंसर को 1 के इक्वल ही रख लेंगे, वैसे इक्वल रख देंगे, या फिर कैलकुलेटर में इंटीग्रेशन की मॉड यूज करते हुए इस फंक्शन को पुट करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लिमिट्स ही पुट नहीं की जा सकती कैलकुलेटर में. तो इस सिचुएशन में कैलकुलेटर भी इस इंटीग्रेशन का आंसर देने से जो है वो कासिर है, वो नहीं दे सकेगा. लेकिन चलिए देखते हैं. अब ऑब्वियसली अगर हमने इस बेल शेप कर्व की इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की मीन यानी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी वो अच्छा खासा डिफिकल्ट फंक्शन था, अब उसकी एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इंटायर डोमेन यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे. उस तरह से आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम हो जाएगा. लेकिन सवाल फिर वही है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे? प्रॉब्लम. फिर वो कहते हैं अगर आपने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करें. उसके लिए आप एफ ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और फिर इंटीग्रेट करें. जो रिजल्ट आ जाए उसमें से मीन का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दें और इस तरह से आपको वेरियस ऑफ एक्स मालूम हो जाएगी. और वेरियस ऑफ एक्स का आप रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मालूम हो जाएगी. But the problem is how to integrate this complex function. It is not an easy task to integrate x squared into f of x dx in this situation, when f of x is quite complex. So what to do? Okay. An interesting feature of normal distribution is no matter what are the values of mean and standard deviation, whenever a bell-shaped curve is drawn,
total area under the graph is equals to 1. If we take that area that is one standard deviation from the mean position, it is always equals to 68%, that is 0.68. If we take two standard deviations, then the area for two standard deviation is always equals to 0.95. Similarly, the area corresponding to three standard deviations is always equals to 0.997, no matter what are the values of mean and standard deviation of that particular normal distribution. इसको उन्होंने ग्राफिकली भी शो किया है. अब आप देख सकते हैं अगेन ये एक बेल शेप्ड कर्व है जिसमें मीन 0 नहीं है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नहीं है. लेकिन अगर हम इसकी वन स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया मालूम करना चाहें तो विदाउट एनी कैलकुलेशन वो 0.68 है, जिसको 68% लिखा जा सकता है. No matter what are the values of mean and standard deviation in this graph, we can always say that the area that is represented by the red region is always equals to 0.68, while the area that is the sum of red and green region is always equals to 0.95, that is 95%. Similarly, the area that is the sum of three areas, red plus green plus blue, is always equals to 0.997. So this is the rule 68, 95 and 99.7. Whenever you are to calculate the area corresponding to one standard deviation from the mean position, it is always equals to 0.68. No need for any calculation. Similarly, area corresponding to two standard deviations from the mean is always equals to 0.95. Area corresponding to three standard deviations from the mean position is always equals to 0.997. तो ये उन्होंने अब करके भी दिखाया कि कौन सा एरिया 68% यानी 0.68 है. तो ये वो एरिया है जो रेड रीजन से रिप्रेजेंट किया गया है. टोटल एरिया इंटीग्रेशन के बाद 1 मिलता है. अगर सिर्फ वन स्टैंडर्ड डेविएशन वाले एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, पहले से बाबे कर चुके हैं, हमेशा 0.68 आंसर आएगा. सिमिलरली अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी इंटीग्रेट दिस एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0.95. So no need of any integration. We can simply say that the area that is two standard deviation either on the right hand side or on the left hand side from the mean position is always equal to 0.95. Similarly, for three standard deviations, the corresponding area is 0.997. ये इन्होंने दिखाया हुआ कि ये वाला एरिया जो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया है, it has an area of 0.997, that is 99.7%. Next up thing, they are saying that if you want, you can confirm this thing by integrating the probability density function from mu minus standard deviation, that is mean minus one standard deviation, to mean plus one standard deviation. But the question is the same, how we will integrate this function? It is not an easy task. It is very difficult. Exponential plus obviously square vs में काफी मुश्किल सवाल है नहीं. So it is not an easy task to integrate this function. तो कैसे integrate करेंगे? Problem यही है. But they are saying if you want to integrate, just integrate the function for one standard deviation, you will get the answer 0.68. If you integrate the function for two standard deviations, you will get an answer of 0.95. And if you integrate this function for three standard deviations, you will always find an answer equal to 0.997. जी ये रूल है. अब मतलब ये है कि वो बता रहे हैं इंटीग्रेशन करने का फायदा नहीं है, इंटीग्रेट करें तो भी आंसर 0.68 ही आना है, ना करें तो भी आंसर 0.68 ही आना है. तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता है इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर लें, वरना 0.68 यूज कर लें. अब वो कहते हैं कि हाउ गुड दिस रूल इज, मतलब कितना अच्छा है ये रूल. लेट अस एग्जामिन दिस रूल. So we take just one example. If you are given data for 120 athletes that are women, and you know that the mean weight of those 120 women is 127.8 kilogram, I guess, and the standard deviation is 15.5. Sorry, pounds में होगा, किलोग्राम नहीं होगा.
15.5 पाउंड्स ऑब्वियसली। तो क्या होगा कि आपको मीन पता चल गया कि 127.8 पाउंड्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15.5 पाउंड्स है। टोटल जो वुमेन है 120 है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद इन मीन विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी वुमेन फॉल करेंगी, कितनी वुमेन आउट ऑफ 120 विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉल करेंगी, तो आप सिंपल क्या करें 120 का 68% कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने पहले तो बताया कि मीन से वन स्टैंडर्ड डेविएशन का आगे का मतलब 127.8 में एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 15.5 ऐड कर दें, फिर उसमें से एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 15.5 माइनस कर दें, तो ये वो एरिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें कितनी वुमेन फॉल करेंगी, बहुत आसान है, टोटल वुमेन का 68% कैलकुलेट करें। टोटल वुमेन थी 120, तो उसका 68% कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 82 रनर्स या 82 एथलीट्स। अब ये तो था बगैर कैलकुलेशन के। अगर हम इस हिस्टोग्राम जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ड्रॉन है से नंबर ऑफ वुमेन एक्सट्रैक्ट करें और उनको सम अप करें इस रीजन के लिए एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए, तो एग्जैक्ट आंसर आता है 79। तो आप देखिए बगैर कैलकुलेशन के आपको 82 मिला, इतनी सारी कैलकुलेशन करके आपको 79 मिला, तो क्या फायदा हुआ, आप 82 ही मान लेते। इतनी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की आखिर में आपको पता चला कि सिर्फ आंसर मिला है 79, जबकि 82 वैसे ही मिल रहा था। और ये तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन थी जिसमें डिफरेंस ज्यादा आता है। जी सर ये 79 कैसे आया है? 79 आया है कि देखिए आप ये देखेंगे जो जहां तक हमने शेड किया हुआ ना एरिया, इसमें तकरीबन 3 रेक्टेंगल्स पूरे पूरे आ रहे हैं, ठीक है जी, और जो एक रेक्टेंगल है वो पार्शियल सा आ रहा है। तो टोटल एरिया 1 है आप, और टोटल एरिया 120 के बराबर है। तो ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करेंगे और इसका प्रोपोर्शन 120 के हिसाब से मालूम कर लेंगे तो 79 आ जाएगा। लेकिन अब वही बात हो रही है कि इतना मुश्किल काम करेंगे, पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं कि इन रेक्टेंगल्स की विड्थ देखेंगे और इनकी हाइट देखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे स्केल पर, फिर इनका लेंथ इंटू विड्थ करके एरिया कैलकुलेट करेंगे। सपोज इनका एरिया आ जाता है पॉइंट आप लगा लें कि 53, तो हम लिखेंगे 0.53 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 120, और इस तरह से आंसर माइट भी आपके पास जो है वो कोई आ जाता है 62, 63 या जो भी आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास असल में आएगा 79। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे आंसर 79 आएगा, बगैर कैलकुलेशन के भी आंसर 82 आ रहा था। और ये तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन थी जहां पर फर्क बहुत ज्यादा आता है। अगर हम टू स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहां से हम 31 बैक जाएंगे मीन से, और 127.8 से टू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 31 आगे जाएंगे। अब अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें अकॉर्डिंग टू द रूल तो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 120 95 तो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 120 मिलता है 114। और अगर इस सारे एरिया को कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करके मल्टीप्लाई बाय 120 करते हैं तो मिलता है 115। तो आपने देखा जब टू स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम आए तो द अप्रोक्सीमेशन बिकम मोर एक्यूरेट। नाउ इफ वी वांट टू calculate the actual number of runners for 3 standard deviations, then we can see that for 3 standard deviation, entire histogram is inside the shaded area. It means all 120 athletes are within 3 standard deviation. Their weights are within 3 standard deviation from the mean. And now if we calculate this from our formula, that is 0.997 of 120, it gives us a value of 119.6, that is 120. So for 3 standard deviations, we are getting exactly the same answer. So therefore, we seldom integrate this complex probability density function. What we do for 1 standard deviation, for 2 standard deviation, for 3 standard deviation, we always make use of this rule, that is 68%, 95%, and 99.7%. Now, what about other situations? For example, you are appearing in a set exam where the scores are
normally in between 200 and 800. These are the upper and the lower bounds of set score. So if you are given that the mean of set score is 500 and its standard deviation is 50, and it is a phenomena that is basically following a normal distribution. So the set score is following a normal distribution. Its lower bound is 200, its upper bound is 800, its mean value is 500, and its standard deviation is 50. And we are interested to calculate that how many students will be there that will be having score between one standard deviation from the mean position. That is 50 less than the 500 mean value and 50 more than the 500 mean value. So how many students will be in this domain from 450 to 550? So since it is a one standard deviation area, so it will always be equal to 68%. That is 68% of the total candidates taking the SAT test. ठीक है जी, SAT टेस्ट में सपोज 1000 लोगों ने अपेयर हुए, उसका 68% वो होगा जिनके मार्क्स जो है वो 450 से 550 के अंदर होंगे. शर्त क्या है? शर्त ये कि इफ द सेट स्कोर इज फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 50. ये एक अजम्पशन है जो हमने की है. अब जरूरी नहीं है कि सेट का स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कोई मेरे जैसा टीचर हो, आसान सा पेपर बना दे, सारों के नंबर पूरे आ जाए, तो उस सिचुएशन में सेट्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें. देख लें, जो टीचर कहते हैं अक्सर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं वो. और नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ये भी नहीं पता चलता कि वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है. चले कोई बात नहीं. तो खैर, अब अगर हमें कोई 95% का कहेगा यानी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, तो देखिए 500 मीन है, उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वी विल सब्ट्रैक्ट, so we will get 400, and if we add 2 standard deviation in the mean value we will get 600. So the percentage of students between 400 and 600 score will be 95%. Similarly अगर हम 3 standard deviation के लिए करें तो भी हम ये कर सकते हैं कि subtract 150 from the mean value, that is 500, and subtract 150 in the mean value, so it will become 650. So the number of students that have a score between 350 and 650 is 99.7%. देखिए कैसे हुआ. 500 मीन वैल्यू थी, स्टैंडर्ड डेविएशन 50 थी. अगर आपने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन सब्ट्रैक्ट करनी है तो इसका मतलब है 3 into 50 150 हो गया, तो 500 में से 150 माइनस करेंगे, 350 आ जाएगा लोअर बाउंड, और 500 में अगर 150 ऐड करेंगे तो 650 आ जाएगा अपर बाउंड. तो अब अगर हम मीन वैल्यू से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कम और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जा रहे हैं, तो द स्कोर बिटवीन 350 एंड 650 विल बी 99.7%. यानी 99.7% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स विल स्कोर अ स्कोर बिटवीन 350 एंड 650. ये हो गया. लेकिन व्हाट अबाउट कैलकुलेटिंग द परसेंटाइल? एक्चुअली व्हेनेवर यू appear in an international test, most often what you will be given a percentile score. So what would be your score if you want to be ahead of 90% of the candidates? It will be the 90th percentile. अगर आप एक टेस्ट में अपियर होते हैं and you score better than 90% of the candidates that appear in that particular test, then you say that your percentile is 90%. Your score is such that it is more than 90% of the candidates of the test. So if this score is Q, then what is the probability that your score, if the probability is 0.9, you are given that you have scored a score that is better than 90% of the candidates, then what is that score? वो स्कोर है क्या जो 90% उससे बेहतर है? तो याद रखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? टू फाइंड दिस क्यू वी विल यूज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन रिवर्स मैनर.
First of all, we will convert this normal distribution into standard normal distribution. And after this conversion, we will read the table in the reverse direction. That is, we will find out the number for which the probability is 0.90. And hence, we will find that what is the actual value of x in terms of numbers that are between 200 and 800. लेकिन the author has not given the solution. मैंने आपको बता दिया how to solve this. अब अगर ये सवाल मैंने दे दिया, क्या बनेगा? यही तो होता है probability में. This what happens. Okay. So they have told you that in terms of complex probability density function, what you can do, you can say that if you integrate the function from 200 to that particular q value, and you get the result as 0.9, then just solve this equation for x and get the value of us q. But again, how to integrate this function? It is not an easy task. ना ये इंटीग्रेट होगा, ना x की लिमिट आप पुट कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ q, ना q मालूम होगा. करेंगे क्या सर? प्रॉब्लम यही है, सस्पेंस यही है. हर जगह पे इंटीग्रेशन में आके फंस जाते हैं और इंटीग्रेशन होती नहीं है. और फंसाया हुआ किसको? इंजीनियर्स को फंसाया हुआ इंटीग्रेशन में. अब कोई आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो है नहीं, लेकिन वो फंक्शन बड़ा मुश्किल है. मसला ये, इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फंक्शन. क्यू तो लिमिट है ना, वो तो आफ्टर इंटीग्रेशन पुट होगी इन प्लेस ऑफ एक्स. पहले इंटीग्रेट कैसे होगा, मसला ये. तो वो यही कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर क्यू. अब कौन सॉल्व करे थे? तो अब उसने सोल्यूशन की तरफ वो आया. What is a standard normal variable? You must reckon this thing that internationally the variable which follows a standard normal distribution is always represented by capital Z. So this is the variable with a mean equals to 0 and a standard deviation equals to 1. And it is following a normal distribution. So what happened that all normal distributions can be converted into a standard normal distribution. There is no normal distribution that can't be converted into a standard normal distribution. Every normal distribution can be converted into a standard normal distribution. And what is the advantage? Okay, how we will convert a normal distribution into a standard normal distribution? We will subtract the value of mean from the value of x, and then we will divide the answer with the corresponding standard deviation. And hence, if x is following a normal distribution, it could be converted into z, that is following a standard normal distribution. यहाँ पे क्या बताया? According to central limit theorem, how we will convert a normal distribution into a standard normal distribution? By simply subtracting the mean from the value of x and then dividing the answer with the corresponding standard deviation. Hence, x could be converted into z, and z is a standard normal variable that is following a standard normal distribution with mean equals to 0 and standard deviation equals to 1. So what is the advantage of this conversion? The advantage is that somebody calculated all the integrals for the standard normal and put them into a table. So we never have to integrate. So that was the basically secret जो हमने रिवील कर दिया. क्या हुआ कि ये इंटीग्रेशन कभी करनी नहीं पड़ती. वो somebody कौन था जिसने ये सारी इंटीग्रेशन कर दी थी? वो somebody जो है वो बॉस जी कौन था? पागल था वो कह रहे हैं.
वो पागल नहीं था, वो बेचारा पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन आजकल के दौर में हर पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो पागल ही समझा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत अरसे पहले, सैकड़ों साल पहले कह दी थी ये बात कि हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। ठीक है, तो आजकल आप लोग वेबसाइट्स पढ़ते हैं और आजकल आप लोग सोशल मीडिया पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोगों को जो आपके बड़े खपती समझते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी ने पहले बता दिया था कि हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो ये हमें पागल कहा जाएगा पढ़े लिखे लोगों को? ये आज से 50, 60, 100 साल पहले भी लोगों को पता। नहीं सर, आपकी बात तो कर ही नहीं रहे। तो वो भी तो पढ़ा लिखा ही बंदा था ना, पढ़े लिखे बंदे को बुरा कहेंगे तो क्या? अब देखिए, मेरा आइडियल है वो गॉस। यार आपने गॉस को बुरा कह दिया। गॉस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अगर मुझसे पूछें तो मैं इतना जो है ना वो आइंस्टाइन से इम्प्रेस नहीं हूँ जितना मैं गॉस से इम्प्रेस हूँ। अब हो सकता है वो भी उसी का ही हो। उसका तो बहुत सारे गॉस के और भी है, एलिमिनेशन भी है और वो इचलन मेथड भी है, रिड्यूस इचलन मेथड भी है। तो काफी सारे गॉस की काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन गॉस को मैं पसंद क्यों करता हूँ? उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्योंकि इसने क्या किया, इसने कहा कि जी ये इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन है करने की फॉर्मूला खत्म जरूरत कर दिया। जी क्या कह रहे? सॉरी क्या कह रहे? इंटीग्रेशन खत्म कर दी इसने सर। इंटीग्रेशन खत्म नहीं कर दी, आपके लिए आसान कर दी। तो यही तो देखें, टीचिंग का या फिर जो स्कॉलर है उसका यही तो काम होता है कि वो चीजें जो दूसरों के लिए मुश्किल होती हैं वो उनके लिए आसान कर देता है, और बात होकर तो जिंदगी आसान कर देता है। ठीक है जी। तो स्कॉलर वो नहीं होता जो लोगों को तंग करे, याद रखें। स्कॉलर लोगों को खुश करता है। खैर, अब वो कहते हैं कि जी कैसे वो नॉर्मलाइजेशन करता है। तो उन्होंने मिसाल दे दी कि अगर 0 मीन है स्टैंडर्ड नॉर्मल की, तो अगर किसी की 100 है तो वो 100 को 0 पर स्केल कर देता है, 200 को 2 पे स्केल कर देता है, और इस तरह से वो कर देता है। अब हम सवाल करते हैं प्रैक्टिकल, वही सेट का टेस्ट है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर less than 575. So the question is, what is the probability that x is less than equals to 575? X is following a normal distribution with mean 500 and standard deviation 50. What is the probability that x is less than equals to 575? So what we will do, we will convert this x into z by simply subtracting the mean 500 and then dividing the answer with the standard deviation 50. Now it became 1.5. So now the question is not x, probability of x less than equals to 575. Rather it is probability of z less than equals to 1.5. So we need to calculate probability of z less than equals to 1.5. Now we can simply calculate this probability using the standard normal distribution table. But again, ये आपको डराने के लिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करनी है तो 200 से 575 तक इसको इंटीग्रेट करें, डेंसिटी फंक्शन में मीन की जगह 500 पुट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 50 पुट करें और इंटीग्रेट कर दें। लेकिन मसला ये आ गया कि अगेन इस इंटीग्रेशन को करेगा कौन? तो वो फिर क्या कह रहा है सर ये 200 लिमिट 200 क्यों पुट की? इसलिए कि सेट का मिनिमम स्कोर 200 होता है। आपने कभी सेट दिया हो तो आपको पता होगा। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में मुझे ऐसी बात करनी पड़ गई। कभी सेट दिया होता तो आपको पता होता कि उसका मिनिमम स्कोर 200 होता है, खाली छोड़ के भी आ जाता है। और मैक्सिमम कितना होता है? 800। टेंशन नहीं लेनी, सेट का स्कोर देके सिर्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है जो आप पहले ले चुके हो। सही बात है, ये पुराना वाला है। ठीक है ना? अच्छा जी, खैर, तो अब वो ये इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती। फिर हम क्या करेंगे? हम z इक्वल्स टू 1.5 की प्रोबेबिलिटी टेबल में से पढ़ लेंगे, और टेबल से जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये 0.9332 मिलेगी। अब सवाल ये है कि टेबल से 1.5 की प्रोबेबिलिटी 0.9332 कैसे मिलेगी? बहुत आसान है, टेबल खोल लेते हैं हम। तो this is the table for standard normal distribution, and if we want to calculate
probability of 1.50, then what we will do? We will go towards the right hand side from the row 1.5 and we will go downwards from the column 0.00. So at the junction of 1.5 row and 0.00 column, the answer is 0.9332. So this is basically reading the table in the forward direction. That is to calculate probability of a given number. So what was the given number? The given number was 1.5. And for 1.5, we calculated the probability and it was 0.9332. Therefore, we said that probability of Z less than 1.5 is 0.9332. And hence we avoided the complex integration. And credit goes to the great mathematician, scientist, researcher, scholar, Gauss. Not our local, आगे आप समझदार जो पेपर छापते रहते हैं करते कुछ नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है साइंसेस में, एक डॉट की भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक डॉट की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. अगर है तो नेम द डॉट वेयर यू कंट्रीब्यूटेड. तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है. मजे की बात यह है कि आइजैक न्यूटन हो या आइंस्टाइन, इस पे 400 लोग पीएचडी कर चुके हैं. इन लोगों ने खुद पीएचडी नहीं की थी. बात सही है कि नहीं? 400 लोग पीएचडी कर चुके हैं इनके कामों पर, इन्होंने खुद पीएचडी नहीं की थी. और हमारे एक इकबाल ने अलैहि रहमत, उन्होंने एक पीएचडी की थी, उन पे भी 400 लोग पीएचडी कर चुके हैं. उन्होंने की थी पीएचडी, लेकिन उन पर 400 लोग पीएचडी कर चुके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में दुनिया में. तो इसका मतलब ये है कि असल चीज पीएचडी का करना नहीं बल्कि नॉलेज का होना है. एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज मैटर्स. डिग्री मैटर नहीं करती, फायदा भी नहीं देती. अच्छा जी, ये जो है ये इतनी जबरदस्त, मेरा पूरा एक लेक्चर है जो मैंने बनाया हुआ अपने वर्ड फाइल में, वो मैं अपलोड करूंगा, वो पढ़ना. Actually, normal distribution is the most popular distribution when we discuss natural phenomena. For example, the meteorological department of Pakistan or any country predicts or forecasts the weather on the basis of normally distributed data. Normal distribution is the most famous distribution in the world, most authentic distribution in the world. If you are to certify your equipment or your research, the first requirement would be the confirmation from the confidence intervals of normal distribution. Because now it is very difficult to establish a new law of size. So to establish your research, you need to have confirmation from the normal distribution. Otherwise, you will not be considered right. You will not be considered correct. Your research will be bogus. Until or unless you have a proof from the normal distribution that you have correct or appropriate confidence intervals, confirming that 98% or 99% of the time your equipment operates correctly. Your research is found to be correct 98% of the time. Only then you will be considered a good researcher and you have established a correct research. So this is the importance of normal distribution. क्लास आपकी आप आई नहीं, कोई हाल नहीं. इन बच्चों से पूछे कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ. बच्चे क्यों नहीं आते पढ़ने? बच्चे नहीं पढ़ने आते, क्या करें? बच्चे नहीं पढ़ने आते. सर इसकी एग्जांपल एक और करवा दें. बिल्कुल कराएंगे, भी एग्जांपल पर एग्जांपल होगी, टेंशन नहीं लेनी आपने. अगला सवाल, यू नो दैट, मतलब
न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनका अक्सर उनकी सेहत की जो एक अलामत होती है वो ये होती है कि उनका वेट क्या है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बिल्कुल यही यहाँ पर प्रॉब्लम में डिस्कस हो रहा है कि इफ इन अ पर्टिकुलर कंट्री द मीन बर्थ वेट इज 109 ounce and a standard deviation of 13 ounce, then what is the chance of obtaining a birth weight of 141 or heavier ounces? And B part, what is the chance of obtaining a birth weight of 120 or lighter? कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, क्या चांस है कि उसका वेट जो है वो 141 ऑन्स या उससे ज्यादा होगा या उसका वेट 120 ऑन्स या उससे कम होगा। अब ये दो सवाल दे दिए हैं और अजम्पशन क्या है कि लेट द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी follows a normal distribution with mean equals to 109 and standard deviation equals to 13 ounce. Then what is the probability that X is greater than 141? Or in B part, what is the probability that X is less than 120? Since it is a normally distributed data. 141 minus. Yeah, since it is a normally distributed data, but the distribution is not standard normal because it has a mean other than 0 and it has a standard deviation other than 1. Therefore, we will convert this normal distribution into standard normal distribution. And how we will convert? The question is probability of X greater than 141. So we will subtract 109, that is the mean from the given number 141, and then we will divide the answer with the standard deviation, that is 13. Now this question of X, that was probability of X greater than 141, has become a question of Z, that is probability of Z greater than 2.46. Now, as I told you earlier, that this probability distribution table that is being constructed for standard normal distribution is constructed cumulatively and it gives the probability for less than value. So if we need to calculate probability of Z greater than 2.46, table will not give us this probability. Rather, it can give us the probability of Z less than 2.46. So to find the probability of Z greater than 2.46, what we will write? We will write probability of Z greater than 2.46 is 1 minus probability of Z less than 2.46. And for probability of Z less than 2.46, we will again consult the table and we will find the probability corresponding to the number 2.46. So let us again go to the table and find out the probability for Z equals to 2.46. So again, we will go towards the right hand side from 2.4 and we will go downwards from 0.06. From here we will go downwards, and from 2.4 we will go towards the right hand side, and at the junction of 2.4 row and 0.06 column, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, we will get the answer as 0.9931. Why we decided that this is the answer? Because it has a column of 0.06 and it has a row of 2.4. So if we add 2.4 into 0.06, we get 2.46. So the probability corresponding to 2.46 is 0.9931. So therefore, in the slide, we are subtracting this 0.9931 from 1 to get the probability of Z greater than 2.46. Here it is worth mentioning that the probability 0.9931 is a probability of Z less than 2.46. Why? Because this table and all the tables of any distribution are always constructed for less than. They are constructed cumulatively, that is, they are constructed for a particular value and less than that particular value. So if we want to calculate probability for a particular value and greater than that particular value, what we will do? We will say like probability of Z greater than 2.46 is
equals to 1 minus probability of z less than 2.46, because the table is constructed for less than situation. Okay. Now coming back to the question again. So that was the first part where we were needed to calculate the probability of z greater than 141. Now in the second part, the question was probability of z greater than, less than 120. So again, to find out the probability of x less than 120, we will convert this x into z by subtracting the mean value 109 from 120 and dividing the answer with the corresponding standard deviation, that is 13. Hence the question became a question of z, and the question is now probability of z less than 0.85. So for probability of z less than 0.85, we will again consult the table. And for 0.85, we will go towards the right hand side from 0.8 and downwards from 0.05, and at the junction of 0.8 row and 0.05 column, we will get the probability as 0.8023. Since we needed only the probability of 0.85 and we found out that it is 0.8023, so this is our answer, that probability of z less than 0.85 is 0.8023. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसका रिलेट कर सकते हैं जितना दिन में 12 घंटे होते हैं, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर दिन के 12 घंटे का टेम्परेचर बेल शेप कर्व को फॉलो करे, कभी बड़े और कभी कम, और वो बेल शेप कर्व को फॉलो करे, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब याद रखिए कि टाइम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं होता कि टाइम का पहला घंटा बड़ा हो और दूसरा घंटा छोटा हो। बात आप समझ रहे हैं? हाँ, यूं जरूर है कि अगर दिन के 12 घंटों में टेम्परेचर कभी बढ़ और कभी कम रहा है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप कर्व फॉलो कर रहा है, तो हम यही कहेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे फिनोमेना है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे फिनोमेना है जिनको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए कर्व फिटिंग के थ्रू उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर देते हैं। व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इज टू जनरेट अ डमी डेटा दैट uses statistical evidences of the previous data to predict the data in future, and hence to forecast or predict that how this parameter will be changed or will vary in future. How many rain will occur in the next monsoon season? How the temperature will rise or fall in the coming summers or winters. So the peak of statistical analysis is to forecast, is to predict, is to generate a time series that can predict the upcoming futures. लेकिन ये अल्लाह की कारस्तानियों में एक मुदाखलत भी है, लिहाजा इस पर यकीन रखना शरन हराम है, लेकिन कैलकुलेशन मौजूद है। बात आप समझ रहे हैं कि एक नॉलेज है और नॉलेज के बेस पर एक कैलकुलेशन, आप टाइम सीरीज जनरेट करते हैं और आप फ्यूचर के टाइम के बारे में प्रिडिक्ट कर देते हैं। आप देखें ना, गूगल आपको बताता है आज बारिश होगी या नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है कि किसी का इल्म, बारिश का इल्म किसी को है ही नहीं। तो फिर मसला क्या है? मसला है कि आप ये बता सकते हैं कि कितनी बारिश होगी, और ये बारिश बेहतर होगी इंसान के लिए या बुरी होगी। तो सिर्फ ये मालूम करने से कि बादल खड़केगा और पानी गिरेगा, ये तो नहीं पता चलेगा होने के वाला। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें बारिश से नहीं पता चलती। और अगेन वही बात है, बहुत दफा आपने ये देखा होगा बारिश भी सही नहीं पता चलती है। ये कहते हैं बारिश सुबह होगी, वो होती है रात को जाके, तो उसमें भी ये गलत हो जाते हैं बहुत दफा, लेकिन बहुत दफा ठीक भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत दफा ठीक भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक नॉलेज है, और सीखने की हद तक दुनिया का कोई भी नॉलेज सीखा जा सकता है, लेकिन ये कि उस पर एतकाद रखना मना है। इसी टाइम वाली बात को अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहा गया? जब इसकी मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो।
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिसकी मीन 0 होती है और जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है और जिसका टेबल हमारे पास मौजूद है। और याद रखिए कि दुनिया की कोई भी नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट की जा सकती है। तो होता क्या है कि हम प्रीवियस डेटा को लेकर ना उसको कर्व फिटिंग के थ्रू उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं और फिर उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर या फोरकास्टिंग करते हैं। और ये बहुत दफा ठीक होती है, लेकिन हर दफा ठीक होगी ये जरूरी नहीं। ठीक है, याद रखिए जितना भी होता है ना, ये जो वेस्ट में फ्यूचर को वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी या फिर हमें इतनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में चाहिए होगी या फिर माइनिंग के थ्रू जो रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाएंगे वो इतने हो जाएंगे, या फिर जो हमारी ज़रई जिसे कहते हैं अजनास हैं, ठीक है, वो हमारी कितनी बढ़ जाएंगी। ये सब का सब मोस्टली नॉर्मल पे चल रहा है। तो गॉस को इजी मत ले, ये बड़ा साइंटिस्ट, लोगों की इसकी समझ नहीं है। और मजे की बात, लेटेस्ट रिसर्च जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ साइंस नहीं बन रहा, इसी की कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अगर पूरी होती हैं तो आपकी बात मानी जाती है, इसी की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, अगर ये कंफर्म करता है तो आपकी बात पूरी होती है। तो अगर गॉस से कोई चीज गलत हो जाए तो लोग लेते ही नहीं उसको। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके रिसर्च को, चाहे आप मैनेजमेंट साइंसेस के हों, आप पॉलिटिकल साइंसेस के हों, आप इंजीनियरिंग साइंसेस के हों, अगर आपकी रिसर्च को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्रूव नहीं कर रहे तो आपकी रिसर्च कहीं भी नहीं मानी जाएगी। तो इस वक्त तो ये बहुत ही बड़ा बना हुआ है, पहले फिर भी कम था, क्योंकि जब पुराने जमाने में बहुत से लॉ ऑफ साइंसेस नहीं थे तो लोग लॉ ऑफ साइंसेस डिस्कवर करके बड़े स्कॉलर बन जाते थे। फिर जब लॉ ऑफ साइंसेस ज्यादातर हो गए फिर लोग कुछ प्रिंसिपल्स बना बना के साइंटिस्ट बनते थे, जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब लॉ ऑफ साइंसेस एस्टेब्लिश हो गए तो ये काम होना कम हो गया। तो अब इसके वक्त क्या होता है कि आप एक हाइपोथेसिस देते हैं और फिर हाइपोथेसिस जो है उस पर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को फिर आप पुट करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स में। अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये बातें सही हैं तो आपकी रिसर्च स्टैब्लिश हो जाती है, मान ली जाती है। अगर वो कहती है कि बातें ठीक साबित नहीं होती तो रिजेक्ट हो जाती है। और लॉ ऑफ साइंस कब बनता है? जब एक ही बात मुख्तलिफ मटीरियल्स पर और मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस पर ठीक साबित हो तो वो लॉ ऑफ साइंस बन जाए। तो अब लॉ ऑफ साइंस बनने के चांसेस कम हैं। So that was all about today's lecture. So I hope that अच्छा सर जी बोलें। सर, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन इसी तरह आएंगे पेपर में या कोई डिफरेंट होगा? मैं यही स्लाइड ना दे दूं पेपर में? नहीं, क्वेश्चन बेशक चेंज आप करते हैं लेकिन इसी तरह का होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह का होगा। और अभी मैं एक आपको अगले लेक्चर में, जो मेरा लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह आपके साथ, उसमें मैं जो है ना वो आपको एक बड़ा ही डिटेल डॉक्यूमेंट वर्ड का शेयर करूंगा और उस डॉक्यूमेंट में मैंने बुक की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व किए हुए, ताकि आपको बुक की एक्सरसाइज ना खोलनी पड़े, बल्कि एक्सरसाइज के डिफिकल्ट सवाल मैंने आपके लिए खुद ही सॉल्व कर दिए। और उसमें मैंने अच्छा काम ये किया कि मैंने ईच एंड एवरी स्टेप लिखा है, बिल्कुल प्रॉपर स्पून फीडिंग की है कि अगर आपसे कोई भी चीज आपको ना समझ आ रही हो तो वो मैं सही करूं। तो स्पून फीडिंग कोई गलत बात तो नहीं है ना? थैंक यू सर। आप थैंक यू बोल रहे हैं शाबाश। चलें जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट